बैट7 एंड CricTracker प्रेजेंट्स रन की रणनीति में हूं आशिका गुप्ता। गुड मॉर्निंग आप सबको। मेरे साथ है दीप दास गुप्ता एंड हबीबुल बशर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। I'm sure that you must be enjoying your cup of tea right now. But talking about this match, Zimbabwe versus Netherlands, it's not always कि Zimbabwe के पास chance हो qualify करने का, and the kind of cricket that they have played in this tournament, उनकी तारीफ हमें जरूर करनी पड़ेगी दीप, और शायद हो सकता है कि उनके पास अच्छा चांस भी है क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल, एंड इट इज और अच्छी बात यह है कि जिम्बाब्वे जब एटलीस्ट हम लोग खेलते थे, बादशाह भाई को भी याद होगा, जिम्बाब्वे यूज्ड टू बी अ वेरी गुड साइड, राइट? आई एम नॉट सेइंग टॉप साइड, लेकिन आप फ्ला ब्रदर्स एंड गाय विटल, हीथ स्ट्रीक, स्ट्रैंग ब्रदर्स, it used to be a good side. पिछले 10-15 साल it has gone downhill very very fast. Good to see that Zimbabwe is reviving again. और उनमें वो जज्बा दिख रहा है, वो लड़ने की वो इच्छा दिख रही है जिम्बाब्वे में, जिस तरीके से क्रिकेट खेले। और ऊपर से they have quite a bit of experience as well. A lot of these guys who've been around for a while. बिल्कुल, अगर हम आपको हेड टू हेड दिखाएं जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स के बीच, तो 4 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 3 मैचेस जिम्बाब्वे ने जीते हैं और 1 मैच नेदरलैंड्स ने जीता है। हमें बोल यहाँ पर जिम्बाब्वे ने वाकई में सबको हैरान किया है, सबको अच्छा सरप्राइज किया है इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से वो खेले हैं। अगर वो एक मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं हारते तो शायद 5 पॉइंट्स भी उनके पास हो जाते। कितना इम्प्रेस किया है इस सीजन आपको जिम्बाब्वे? As Deep mentioned, Zimbabwe cricket has been a different scenario now. I mean, back in 2003 and after 2003, two different sides we have seen in Zimbabwe. Team change हो गया। Last year 4-5 साल थोड़ा सा struggle कर रहा था Zimbabwe, but if you look at last 6 months, they actually came back very well. They got some performers, they got some bowlers who can win matches for them. And just before the World Cup, the team started performing. Starting from Bangladesh series against him, they actually played very well. And this World Cup, from the first round, preliminary round, they actually playing very good cricket. Yes, they had a very good game against Pakistan. They played very well against Bangladesh, and so cricket they are playing now, they actually can beat anybody. Yes, Netherlands in this condition will be a good side, but Zim definitely currently their form is very good. बिल्कुल, but on the other hand, Netherlands जो है, they have nothing to lose in this match. दीप, जिस तरीके से it's a win-win for them. अगर वो आज का मुकाबला जीतते हैं तो एक बड़ा अपसेट ये होगा अगर वो जिम्बाब्वे को हरा दे। बिल्कुल, I mean, पूरे टूर्नामेंट में नेदरलैंड्स स्पेशली सुपर 12 में they had nothing to lose. I think qualify करना, I think that's a bit of, I mean, without any this thing, but it was an achievement to qualify into the super 12s, and I think they've done well. They've done well. They have a very good bowling unit. Unfortunately, उनका जो बैटिंग यूनिट है that has not fired at all. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बैटिंग यूनिट में ज्यादा एक्सपीरियंस अगर आप देखें, चाहे वो टॉम कूपर हो या कॉलिन एक्करमैन हो, एडवर्ड्स, मैक्स ओडॉयड, ये सब काफी सालों से खेल रहे हैं। और फॉर एग्जांपल टॉम कूपर जो है, उन्होंने तो अपनी जो सारी जिंदगी वो ऑस्ट्रेलिया में खेला है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से शुरू करके। एक्करमैन है, वो साउथ अफ्रीका के हैं, अंडर 19 साउथ अफ्रीका के लिए खेले हैं। सो वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत है। अनफॉर्चुनेटली जो बैटिंग यूनिट है दैट हैज नॉट फायर्ड एट ऑल। इनफैक्ट जो मैचेस जीते भी हैं उन्होंने, अगर फर्स्ट राउंड में इफ यू थिंक अबाउट इट, 111 122 ऐसे रन चेस करके, वो भी लास्ट ओवर में चेस किया। So bowling unit is nice. It's pretty good actually. ऊपर से उनके आज मेरे ख्याल से बैस्ली दी नहीं खेलेंगे. Obviously he got hurt last game. तो उनका एक ऑलराउंडर वहां से हट गया. So as good as they are, but I think the batting needs to fire for them to compete.
और दोनों टीम की अगर पेसर्स की बात करें तो काफी सुर्खियां बटोरी हैं दोनों टीम पेसर्स ने, काफी एक्कॉर्डियल्स उनको मिले हैं, काफी तारीफ मिली है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा हबीबुल आपको किसने इम्प्रेस किया, स्पेशली पेसर्स की बात की जाए इस टूर्नामेंट में? Seeing Muzarambani bowling very well. Evans also bowled very well. They look like a very good Indian. They got some good spinner as well. Raza has been, he's bowling with some, with good economy and getting wicket in right time. Uh, Other hand, Netherlands has got good bowling attack. But if you look at the matches, yes, I would say Zim is little ahead in pace bowling unit because they got some bowlers who can really, get wickets. दीप, आपके मुताबिक पेसर्स ने इम्प्रेस किया है, जिम्बाब्वे के Oh पेसर्स ने? yeah, oh yeah, Muza Rabbani, जैसे अभी बादशाह भाई ने कहा, he's very very good. He's very underrated as well. और एक पेसर की अब बात करें, मीकरन, ऑब्वियसली he's been around for a while. मीकरन तो सीपीएल वगैरह भी खेलते हैं, so he's been around. वैन मीकरन जो है नेदरलैंड्स के। उसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ एवेंस आए, अच्छे बॉलर हैं लेकिन ज्यादा T20 नहीं खेलते। 50 ओवर में इनफैक्ट he's got a 5 wicket haul against India. Bradley Evans, but he bowled beautifully. I thought, Bangladesh के खिलाफ last over डालना, and he bowled really well that last over. So I think, they have a good unit. In fact, Netherlands has also a good unit. But, the सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया, and I think we should go back to New Zealand, is Tim Pringle, जो Netherlands के left arm spinner है. He's so good. जो seam position है, जो drift है, very orthodox. Maybe T20 में कारगर होंगे, लेकिन maybe not as कारगर or as effective as 50 or even Test match cricket. His father is from New Zealand. Yeah, he can go back to New Zealand and play Test cricket for them. दीप, सारी टीम्स को हमने देखा है कि इंजरीज से काफी ज्यादा जूझ रहे हैं, लेकिन ये दोनों टीम्स के फिलहाल इंजरीज से दोनों दूर है। ये एक एडवांटेज है इनके लिए? बिल्कुल, वो एडवांटेज तो है ही। और जनरली स्पीकिंग जो दूसरे कंट्रीज है, दे कैन स्टिल अफोर्ड एक आधा इंजरी बिकॉज उनका बेंच स्ट्रेंथ होता है। बट इशू विद समवन लाइक नेदरलैंड एंड जिम्बाब्वे एंड मे बी सम ऑफ द अदर टीम्स, क्योंकि जिनका बेंच स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, उनका एक इंजरी भी बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि दूसरी टीम को भी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो, बेंच स्ट्रेंथ जितना भी हो, यू कैन नॉट रिप्लेस जसप्रीत बुमराह, बट हैविंग सेड दैट, एटलीस्ट वो गए तो शामी आ गए, है ना? तो थोड़ा सा यू कैन, बट सम ऑफ द अदर्स, फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स में बाज दिलीडे शायद नहीं खेलेंगे आज, तो उनको फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वैन बीक आएंगे, मेरे ख्याल से लोगन वैन बीक उनकी जगह खेलेंगे। सो या, थैंक गॉड, आई मीन किसी को भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, एंड स्पेशली नॉट वर्ल्ड कप, बिकॉज सब लोगों का ड्रीम होता है टू प्ले वर्ल्ड कप, एंड होपफुली एवरीवन शुड बी फिट। अब साथ में सिकंदर रजा, इस खिलाड़ी की हमें जरूर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि टूर्नामेंट में ये छा गए हैं। आगे आप T20 में, इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका फ्यूचर कैसे देखते हैं अभी? Sikandar Raza played a lot of French game, and he is very familiar to Bangladesh. He is a regular member in Bangladesh Premier League (BPL), and few months back he was playing one of the divisional tournament in Bangladesh, which is in Rajshahi. There's a local tournament in divisional tournament. He actually came there and played. So he is playing around the world, and I think last 1 year, in every format he's been performing, 50 overs cricket, T20 cricket. He looks like a special player now. He's a mature, but definitely any franchise team will love to have him in their squad because he brought everything. He can bat the way, he can bat the top, in the middle. He's an impact batsman, and he is very handy with his bowling too. So yeah, I think going forward, any franchise team will love to have him in their squad. अगर सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से छा गए हैं, तो दूसरी तरफ बैज दिलीडे, जिनकी आपने बात भी करी है दीप का, वो भी छा गए हैं। ऑफ कोर्स आईपीएल फ्रेंचाइजीज सब देख रहे होंगे कि ये दो खिलाड़ी हैं, इनको भी क्यों ना लाया जाए। क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में ये आईपीएल हो सकते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस शुड बी पार्ट ऑफ द आईपीएल रूल, जहाँ पे आप एक एसोसिएट नेशन प्लेयर को स्क्वाड में रखना जरूरी है। जैसे 8 प्लेयर्स ओवरसीज है, 8 का आप 9 ओवरसीज कर दो,
एक एसोसिएट नेशन का वहां पे आप कर दो, उससे क्या है कि थोड़ा सा नो हाउ बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा, और I'm certain, I'm more than certain कि ऐसे 10 प्लेयर एसोसिएट नेशंस में है जो आराम से आईपीएल में खेल सकते हैं इजीली, ऐसे 10 प्लेयर्स कम से कम होंगे। सो आई थिंक दैट शुड हैपन। आपने इन दोनों का नाम लिया, दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। Bas de Leede भी, I mean, I think he's the highest wicket taker and also highest run getter this year for Netherlands. That's been his impact. But I still want to see them score, including Sikandar, against big teams. अभी बोल आज के मुकाबले में किसके पास ज्यादा एज है? क्या जिम्बाब्वे जो है वो भारी पड़ सकती है नेदरलैंड्स पर पूरी तरह से, या आपको लगता है कि नेदरलैंड्स भी आज उनका माइंडसेट अलग होगा, दैट वी हैव नथिंग टू डू, सो go out and play? Yeah, I think Netherlands has got nothing to lose today. I mean, they wanted to do something and they wanted to prove something to this game. Zim in this tournament, as I mentioned earlier, was playing very good cricket. But today, Netherlands, as they already played most of their games and they have nothing to, but they're still a good side. The condition in Australia probably suited them a little bit more than other countries. So they got a good bowling attack, as Deep mentioned, that if their batsmen fire, they can give a big, good run to Zim. It's not going to be easy for Zimbabwe, though they're playing good cricket. But I think today Netherlands is a day probably for Netherlands, to prove themselves and to perform. चलिए पिच रिपोर्ट मैं आपको बता देती हूँ. दिस एडिलेड पिच इज सो हेरी, देयर इज सो मच ग्रास ऑन द सरफेस. दीस डेक्स हैव बीन हियर फॉर ओवर अ मंथ नाउ. द पिच इज वेरी फर्म. आई वोंट बी कंसर्न्ड अबाउट द ग्रीन टिंज. इट्स अबाउट अ 160 सरफेस, गुड बाउंस. इफ आई विन द टॉस आई वुड लाइक टू बैट, बट आई एम नॉट फसी द अदर वे राउंड ईदर. तो दीप, यहाँ पर एडिलेड में टॉस जीतो और पहले बल्लेबाजी करो. मैं इसमें बॉलिंग करना चाहूंगा क्योंकि एडिलेड, ये मेरे ख्याल से पहला मैच है शायद एडिलेड में इस वर्ल्ड कप का. दिस इज स्टार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन समर. आइडिया नहीं है कि पिच, जनरली इट्स अ ब्यूटीफुल पिच बैटिंग के लिए एडिलेड यूजुअली. लेकिन मुझे बस यही है कि आई डोंट नो स्टार्ट ऑफ द सीजन कैसा होगा, ये पिच कैसे बिहेव करेगी, क्या थोड़ा सा ज्यादा जूस होगा इन द फर्स्ट 5-6 ओवर्स वगैरह. सो आई माइट वांट टू बोल हियर. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडिलेड का डायमेंशन थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स. इसका ऑब्वियसली स्ट्रेट बाउंड्रीज आर ह्यूज. 2002-3 में जब हम गए थे, द स्ट्रेट बाउंड्री वाज अराउंड 100 मीटर्स लंबा. लेकिन कंपैरेटिवली द स्क्वायर मीटर्स आर वेरी शॉर्ट. स्क्वायर बाउंड्रीज आर would be around 55-60. So वो एक चेंज है. जनरली हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में या तो पूरा ग्राउंड बड़ा होता है, नहीं तो स्क्वायर बाउंड्रीज डेफिनेटली लंबे होते हैं. But in Adelaide, the square boundaries are very small and the straight boundaries are very long. टॉस हो चुका है, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. अभी बोल, सही फैसला. उनके पास एडवांटेज है या टॉस जीतो बल्लेबाजी करो. Probably they don't want to chase, but I think it's a first game in this World Cup. I'm totally with you, Deep, that if you bat second, it's not going to change much in this wicket. But in the morning, there might be something in the wicket because it's been raining around in Australia. It's cold in Adelaide. What I heard from the boys, that it's very cold in Adelaide. So there might be a little bit assistance with the new ball in the first few hours. So yeah, if Netherlands can get the advantage. Batting second, probably a little bit easier because, as I said, it's not going to change much in the second innings. It's going to probably stay better. But some teams want to bat first. They don't want to chase. So it is also not bad. You put some run and put opposition under pressure. So probably Zimbabwe thinking on that way. Put some on the spot and try to defend. If you want to add? Yeah, I think that's the point. I guess Bashar Bhai just said what I was thinking. One of the reasons you want to bat first is put that pressure of runs on the scoreboard. Generally हम कोई भी टीम हो जब कहते हैं कि high pressure match में हर समय bat first because scoreboard का अलग pressure होता है. And these matches are high pressure matches for both the teams. Both of these teams would fancy their chances. They'll think मैं जीत सकता हूँ इस मैच को. So इसलिए I think that could be it. And obviously it's a good
traditionally a good batting pitch. There's no two ways about it. कल हालांकि काफी ज्यादा बारिश हुई है वहां पर एडिलेड से और तस्वीरें by आ the way, रही थी। अभी मेरे ख्याल से टेम्परेचर 14-15 डिग्रीज है, so breezy 14-15 डिग्रीज because पास में एक नदी भी है, so yeah, yeah, this will remind you of a cold English spring actually. अच्छा, हम लोग इंजरीज की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी इशू एक्चुअली आ गया है नेदरलैंड्स की टीम में, और इवेंट्स की जगह जो है वो ड्रॉप पे आ गए हैं। इवेंट्स को इंजरी हो गई थी बांग्लादेश की तरफ खेलते हुए। क्या क्या इससे प्लेइंग 11 पे आपको कुछ फर्क दिख रहा है क्या? इट्स अ बिग ब्लो फॉर देम। Yes, Sorry. हाँ, बताइए हबीबुल। Yeah, but look, Zaga has been playing for them for a while. He's an all-rounder, can bowl a bit, but definitely Evans is a wicket-taking option. So if you look at that way, it's a loss for them because Evans actually bowling very well. Last two games against Pakistan and Bangladesh, he actually bowled well with the start opening and in death overs. So that's a loss for them. But Zongwell did a lot of battings, did a little bit of battings with his 2-3 overs bowling. But definitely they're going to miss Evans bowling today. जिम्बाब्वे अभी तक इंजरी से दूर थी, लेकिन फिलहाल अभी एक प्लेयर इंजर्ड उनका हुआ है जो कि काफी ज्यादा फॉर्म में था। दीप, इस मैच में जिम्बाब्वे ने अब टॉस भी जीत लिया है, कितने प्रतिशत आप देंगे जिम्बाब्वे को और कितने प्रतिशत नेदरलैंड्स को? Sorry, मैं थोड़ा बाहर बैठा हूँ तो आवाज आ रही होगी, sorry about that. But having said that, I think Zimbabwe is favorites. I won't say firm favorites, but they're favorites to win this game against Netherlands. टॉस का पता नहीं इफेक्ट अभी आगे दिखेगा कितना होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एटलीस्ट जो हम लोग हैं we'd be watching it from a different angle also, right? India is playing the next game, so that is also important कि pitch का behavior कैसा है. So it'll be interesting from that point of view, but I think going in, I think Zimbabwe would be favorites. आपके पीछे जो पंछी है उनको भी लग रहा है कि जिम्बाब्वे ही फेवरेट्स है। they agree with me. चलिए, अब मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। हम ले चलते हैं आपको अपने स्पेशल सेगमेंट सोशल ट्रैकर की तरफ। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, प्रेजेंटेड बाय बैडमिंटन। Okay, so Richard का कहना है we go into the next match with our heads held high. Let's go Chevrons. Okay, so ये मुकाबला नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे के बीच में है, and obviously they have nothing to lose, especially for Netherlands. Sorry, Dutch brothers, no bouncing back. We are going to lose again tomorrow. It will be wise of you to pack your bags before you go play Zimbabwe, so that after the match you won't take much time on your way back home. I think ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो। हमने बहुत सारे अपसेट्स अभी तक देखे हैं इस टूर्नामेंट में। सलमान अहमद कह रहे हैं दैट लिटिल होप फॉर पाकिस्तान गोइंग टू फिनिश टुमारो। ओके, इंडिया का अगला मुकाबला है बांग्लादेश के साथ, और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अब बन रहे हैं कि कौन क्वालिफाई करेगा, कौन सेमीफाइनल में जाएगा। तो दीप, अभी तक सिनेरियो को देखते हुए आपकी 4 टीम्स जो कि जा रही हैं सेमीफाइनल में। Oh Lord. Listen, Group 1 set is extremely tough. New Zealand, I guess, Australia का ना, I mean, it was a big win actually England के लिए yesterday, New Zealand वाला, इसलिए थोड़ा सा और पेचीदा हो गया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये तीनों में से कोई भी 2 टीम है। न्यूजीलैंड still seems to be favorites as one of the teams. ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअली ड्रॉ इज बेटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा ड्रॉ इज फेवरेबल है थोड़ा, बट इट्स डिफिकल्ट। यहाँ से इन दिस ग्रुप आई थिंक साउथ अफ्रीका, इंडिया वुड बी द 2 टीम्स, बट आई वुड वांट, आई डोंट नो, मुझे इंग्लैंड इज स्टार्टिंग टू प्ले प्रॉपर क्रिकेट। पहले 2 मैच इंग्लैंड प्लेड थोड़ा सा शैकल, बहुत ही मतलब दैट वाजंट द ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो इंग्लैंड खेलती है यूजुअली। It's good to see them play sensible and a good brand of cricket कल जो न्यूजीलैंड को हराया, and yeah, but it'll be tough. I think I'd still would go with England and New Zealand if I have to name 4. तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच नहीं रहा है सेमीफाइनल। मतलब
ये काफी बड़ा सरप्राइज होगा कि ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है और वही सेमीफाइनल नहीं, ये में सरप्राइज यशिका, इट्स नॉट अ सरप्राइज। आज तक किसी ने नहीं, डिफेंडिंग वो चैंपियंस के होस्ट डिफेंडर कंट्री और राइट, किसी होस्ट होस्ट कंट्री ने भी किया, राइट? So I mean, if you think about it, it's I mean, the odds are against them. अगर आप वो नॉर्म को फॉलो करें, ट्रेडिशनली देखें, लेकिन ये वर्ल्ड कप देखें जहाँ पे जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान को हरा रहा है और इतने बड़े बड़े अपसेट्स हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एंड द होस्ट कंट्री नॉट रीचिंग इवन द सेमीफाइनल्स। चलिए, फाइनल ना जीते लेकिन सेमीफाइनल भी ना पहुंचना। हबीबुल, आपके मुताबिक कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो कि सेमीफाइनल बी ग्रुप से ये साउथ अफ्रीका एंड इंडिया इज टॉप फेवरेट, बट थोड़ा सा चांस भी है और दूसरे टीम के लिए। इफ बांग्लादेश कैन पुल द वन ऑफ मैजिक डे एंड look, the other teams are strong teams. South Africa, India, they're a strong team, but they're not unbeatable side. They can be get beaten. And if Bangladesh pull up something, then you never know. You might see some major things from Group B too. But yeah, Group A is a little bit very tricky because top every team is you may have to wait till the last game to see who's going to qualify from that group. But this group, yes, probably today we can, after today's game, probably we can decide that which team is, South Africa probably go through, but the second team, probably, after today's game, we can decide, we can see which team is going through. चलिए, तो कॉन्टेस्ट की अब बात कर लेते हैं हम। आज का कॉन्टेस्ट हमारा क्या है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रेडिक्ट द प्लेयर ऑफ द मैच इन जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड्स गेम, और आप जाइए ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जाइए, #BadBreak7 यूज कीजिए। 9:30 बजे से पहले हमें बता दीजिए कि आपके मुताबिक प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा, और हमारे कॉन्टेस्ट के लकी विनर को उनका प्राइज मिल जाएगा। चलिए, लाइनअप हम आपको दिखा देते हैं। रेडी है प्लेइंग 11 फिलहाल जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स की। एक चेंज जिम्बाब्वे की टीम में है आज, क्योंकि इंजरी हो गई है। जोंगवे फिलहाल आज खेलेंगे, इवेंस जो है वो टीम में नहीं है, और नेदरलैंड्स जो है वो सेम प्लेइंग 11 बास्टिलीडे जो है वो गेम में है, वो आज का मुकाबला खेलेंगे और ये सेम प्लेइंग 11 के साथ करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा दीप आपसे ये था कि डैरन सैमी ने एक बयान दिया है, उनका स्टेटमेंट आया है, ही इज वेरी अपसेट, ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि वेस्ट इंडीज जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ऑल्सो ही वांट्स टू से कि जो हमारे वेस्ट इंडीज प्लेयर है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट अब बहुत ज्यादा खेलने लगे हैं, क्योंकि नेशनल टीम में कुछ बचा नहीं है, उनको पैसे नहीं मिलते हैं, ऑफ कोर्स दे हैव टू रन देयर फैमिली आल्सो। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस? आई थिंक डैरन सैमी खुद काफी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेले जितना उनको मौका मिला है, सो आई थिंक कुछ ना कहे तो बेहतर है। दैट इज वन, एंड दैट इज अ फैक्ट। और जिन्होंने बोला दैट इज एक्चुअली अ फैक्ट। मेरे हिसाब से, एंड आई ट्वीटेड दिस अ व्हाइल अगो, मेरा मानना है कि वेस्ट इंडीज, जब वेस्ट इंडीज वर एट इट्स पीक, दे हैड अ कॉमन कॉज, दे हैड अ रीजन टू बी वेस्ट इंडीज। बाकी obviously we all know that West Indies तो कोई country नहीं है, right? They don't even have, जो गाना बजता, that is their cricket song. That is, I mean, they are a lot of different countries coming together. Jamaica, Barbados, Leeward Island, Bermuda, वगैरह वगैरह. So obviously there is no common cause, right? आज अगर हम 4 countries को साथ में, there has to be one thing which binds all of them. So I think what is important is the fact that कि कोई common cause जब तक नहीं मिलता, I think what they need to do is they can start playing for their own countries. Jamaica अपना टीम लेके CWG में खेलते हैं ना, so Jamaica अपना टीम ले, Bermuda अपना टीम ले, till the time they find a common cause. West Indies team of the 70s and 80s, they had a common cause of called racism, discrimination. They had a reason to come together. इस टीम के पास कोई रीजन दिखता नहीं है, और तभी अच्छे इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल है. Unfortunately, cricket is not an individual sport; it's a team sport. हबीबुल, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? Exactly. I mean, look, the country is doing. I don't say that it happens with every countries. I mean, most of the countries has been playing well with the players. To play for in international games, to play for a country is very important. Yes, he's absolutely right. Love doesn't buy from groceries, but playing for a country is a different ball game. It's a different feelings. It is totally different. Playing for country international game cricket is totally different scenario. And whoever's
doesn't play international cricket. His franchise cricket also doesn't go a long way. So I don't think it's the same thing for the other countries. Maybe yes, with the West Indies, because they came from different countries. They don't play cricket, they play together. But that thing which you own your team, that is probably a little missing at this point for West Indies. But definitely it's not the case for the other countries. Any other countries players you ask, they will play franchise cricket, but in the top, definitely they wanted to play for their country. I'm pretty sure about that. ओके चलिए अभी फिलहाल हम आपको पोल दिखा देते हैं कि कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं जिम्बाब्वे को और कितने ओके हु विल स्कोर मोस्ट रन्स सो मैक्स ड्यूड को मिले हैं 65% और क्रेग विन को मिले हैं 35% यहाँ पे पोल में और चलिए देखते हैं मुकाबला जो है अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और बहुत जल्द हम भी लौटेंगे जैसे ही मैच खत्म होगा और दूसरे आज के बड़े दूसरे मुकाबले की बात करेंगे। दीप बहुत शुक्रिया, हबीबुल आपका भी बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। फिलहाल अभी शो में इतना ही, जल्द होती है आपसे मुलाकात।